नमस्ते एवरीवन। आज हम नवरात्रि के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी कि वाई द सो मच ऑफ एनर्जी इज देयर ऑल दिस 9 days, स्पेशली अष्टमी में भी एनर्जी बहुत रहती है। हमको सबको नौ दुर्गा, नौ देवी के बारे में पता है, पर हम इसको नवरात्रि क्यों बोलते हैं इंस्टेड ऑफ नव दिन? सो अकॉर्डिंग टू ऑल सेजेस एंड सेंट्स दैट नाइट प्रोवाइड्स रेस्ट एंड रिजुवेनेशन. During the night, you turn inwards through sleep and you wake up feeling completely refreshed and rested in the morning. So similarly, all these 9 days, what they signify is that you should go inward always. You should always go inward, give rest to your mind, to your body. And after 9 days, when you wake up, it will be completely new you. So that नवरात्रि हमारे यहाँ पे रात का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, हमेशा रहता है. So the deep rest brings freedom from all kinds of botherations, deep relaxations, and creativity also. So Ratri word means that it gives you deep rest or relief from three tapas, that is type of fire which is inside us, the physical, the subtle, and the conscious. So it says that rest from your negativities, drop all the fears and doubts, and we need to work on our strengths. And that is why each Devi represents one strength. Particular strength is represented by each and every Devi. So we need to work on those strengths. And Devi represents this omnipresent cosmic energy. ये जो cosmic energy रहती है, ये जो दिव्य ऊर्जा जो कहते हैं हम, या ब्रह्मांड की जो complete ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, that is very high on these 9 days. And that is why these 9 days are very, very significant when you go inward, when you do fasting, when you actually, I prefer fasting. Yesterday, what we heard in the talk, she was against fasting, but I am completely into fasting. So उसका significance बहुत ज़्यादा है fasting का. The whole creation is permeate, व्याप्त रहती है energy ऐसे. You can pulsate, if you can sit in meditation at night or early in the morning, you could feel that cosmic energy, the rhythm, the vibrations inside you. It is that high on energy. So whatever you do in these 9 days, the prayer, chanting, meditation, also when during this Navratri season, it connects us to our spirit, and getting in touch with the spirit invokes the positive qualities within us and destroys all the laziness, pride, obsession, cravings, and aversions. जो negativity जो we should sleep it out. What they say that we do it when we do meditate or when we focus on any mantras and all. We need to invoke our strengths, inner strengths, powers, and eradicate all the weaknesses and to awaken the divinity which is inside us. जैसे हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि हमेशा कहते थे कि रात्रि को दिन की अपेक्षा ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है. जैसे दीपावली इज ऑल्सो एट नाइट, होली का जो हम दहन रात को करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. रात, शिवरात्रि में भी रात का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, नवरात्रि में भी रात का इम्पोर्टेंस ज्यादा है. तो मोस्टली अवर फेस्टिवल्स विच वी सेलिब्रेट हैव अ सिग्निफिकेंस ऑफ रात, दैट इज नाइट. Why? Because रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं. वॉट एवर द ऑब्स्टिकल्स एंड द नेगेटिविटीज है, वो सब रात में इट स्टेबलाइजेस. सो आधुनिक विज्ञान भी इस बात से एग्री करता है कि हमारे ऋषि मुनि ने जो कहा है कि हजारों वर्ष पूर्व से ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को उन्होंने जाना है, एंड दे स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज डेज. सो दिन में कहते हैं कि जैसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल, आवाज तो बहुत रहती ही है डेफिनेटली अराउंड अस, बट रात को थोड़ा सा शांत हो जाता है सब वातावरण, कोलाहल कम हो जाता है. और दिन में जब सूर्य की किरणें जो है आवाजों की तरंग और रेडियो की तरंगों को भी आगे बढ़ने से रोकती है. दैट इज व्हाट दे से. ऋषि मुनि का कहना है कि व्हेन द सन रेज आर देयर, इट एक्चुअली brings obstacle, and it stops that vibrations completely to flow into the system or to the cosmos. But when you are at night, when the sun rays or sun sets, after that the energy level becomes very high. तभी जो हम
सुबह का मेडिटेशन करते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में जो मेडिटेशन करते हैं, लाइक रात को 3 बजे, सुबह सुबह 3 बजे, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अ स्मॉल साइंटिफिक एग्जांपल वी कैन गिव दैट रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी है, आप अगर रात को चलाओगे तो वो बहुत ज्यादा आपको इमीडिएटली यू कैन कैच द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एनीवेयर। मेनी टाइम्स व्हेन हमें याद है रेडियो तो अब हम लोग कम चलाते हैं, बट आई रिमेम्बर व्हेन एट नाइट आई यूज्ड टू स्टडी what stations we were not able to catch in the daytime, we used to catch it at night very fast. Like श्रीलंका का जो हम लोग नॉर्मली सुनते थे, रात को एक आता था हिंदी सॉन्ग्स का एक वो आता था, तो रात को मैं जैसे ही चलाती थी, इट कैचेस द फ्रीक्वेंसी फास्ट. सो इट्स अ नॉर्मल साइंटिफिक एग्जांपल, बट देन दिस अप्लाइज spiritually or the cosmic way also. It does apply to all of us, all this system. And then it is, they say it is very easy to concentrate at night. Chanting mantra in a very peaceful environment yields auspicious results, and many obstacles of nature are removed during this time. And this time may be used for gaining mental power and yogic powers also. So one big saint has said that there is a Devi energy, Shakti within all of us. And Devi is not somewhere else, not in some other world. If we sit deep in meditation, the glow within the body will brighten and will expand and spread outside. And this is what Devi Puja is. So instead of going outside and doing Devi Puja, we should just sit in meditation and bring out that cosmic energy in us. And that is what our strength lies, and that is what our dhyan is, and that is what our Devi Puja is. So with this thought, we can do our start meditation. So everybody, eyes closed, we'll do our pranayam first, Anulom Vilom and Bhramari Pranayam, removing your specs. Eyes closed. 9 rounds of Anulom Vilom. Close your right nostril first. In from your left. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. 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 Last round. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. And relax. Take deep breaths, normalize your breathing. Keep your eyes closed. Don't open your eyes throughout now till your meditation is done. 5 rounds of Bhramari Pranayam. First finger on your eyelids, second on your nose, nostrils, third above the lips, small finger on the chin, thumbs into your ears. Keep your elbows straight. Inhale, and while exhaling, take out the humming sound. In.
Focus on your breathing. We will invite Mahavatar Babaji, Adi Yogi, Lord Shiva, Devi Durga, सारे देवी देवता, सारे गुरुजन, सभी को हम आह्वान करेंगे, सभी का हम आशीर्वाद लेंगे। मन से सबको इनवाइट करिए, पूरे दिल से। And now I will start the music. You have to focus on the vibrations of the meditation or the mantra which I will be playing. So just be completely involve yourself into those, and you'll feel vibrations going inside you, and you will feel the energy. So I won't be giving you any instructions. कात्यायनी महामाये खड्गबाणधनुर्धरे खड्गधारिणी चण्डी श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। वासुदेवसुते काली वासुदेव सहोदरी वासुदेवसुते काली वासुदेव सहोदरी वसुन्धरा श्रिये नन्दे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। वसुन्धरा श्रिये नन्दे श्री दुर्गा नमोस्तुते। योगनिद्रे महानिद्रे योगमाये माहेश्वरी योगसिद्धिखरे शुद्धे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा पाणे शांगज्यायत बहवे शंख चक्र गदा पाणे शांगज्यायत बहवे पीताम्बरा धरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। पीताम्बरा धरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। Don't get involved with your thoughts. Just focus on the prayer, on the mantra. Rikya Jur Samatharvana
साधु समन्तलोकिनी ब्रह्मा स्वरूपिणी ब्राह्मी श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। वृष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथ सहोदरी वृष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथ सहोदरी वृष्णिरूपधरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। वृष्णिरूपधरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वगे सर्वे सर्वेश्वरी सर्वसाक्षिणी सर्वमृते जडभरे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। अष्टबाहु महासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अष्टबाहु महासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अट्टहासप्रिये भद्रे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। अट्टहासप्रिये भद्रे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। Feel the vibrations. Focus on your breath. दुर्गाष्टकमिदं पुण्यं भक्तिदो यत्पते नरः सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति। सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति। सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति। दुर्गालोकं स गच्छति।
Shanti. Namostute. Sarvajna sarvage sarve Sarveshwari sarvasakshini Sarvam rute jadabhare Shri Durga Devi Namostute Ashtabahu Mahasattve Ashtami Navami Priye Ashtabahu Mahasattve Ashtami Navami Priye Attahasa Priye Bhatre Shri Durga Devi Namostute Katyayani Mahamaye Gadgabana Dhanurdhare Gadgadharini Chandi Shri Durga Devi Namostute अपने विचारों के पीछे ना भागे। वासुदेव सुते काली वासुदेव सहोदरी वासुदेव सुते काली वासुदेव सहोदरी वसुन्धरा श्रिये नन्दे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते वसुन्धरा श्रिये नन्दे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते योगनिद्रे महानिद्रे योगमाये माहेश्वरी योगसिद्धिखरे शुद्धे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते शंख चक्र गदा पाणे शार्ङ्गज्यायत बहवे शंख
शङ्खचक्रगदापाणि शाङ्गज्यायत बहवे पीताम्बरधरे धन्ये श्रीदुर्गा देवी नमोस्तुते पीताम्बरधरे धन्ये श्रीदुर्गा Rikyajur samatarvana Sadhu samantalokini Brahma svarupini Brahmi Shri Durga Devi Namostute Vrishninam kula sambhute Vishnunadha sahodhari Vrishninam kula sambhute Vishnunadha sahodhari रोशनी रूप धरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते रोशनी रूप धरे धन्ये श्री दुर्गा Namostute Sarvajna sarvage sarve Sarveshwari sarvasakshini Sarvamrute jadabhare Shri Durga Devi Namostute Ashtabahu Mahasattve Ashtami Navami Priye Ashtabahu Sattve Ashtami Navami Priye Attahasa Priye Bhadre Shri Durga Devi Namostute Last 5 minutes. Attahasa Priye Bhadre Shri Durga Devi Namostute Durgashtakam idam punyam Bhakti doyat pate naraha Sarvakama vapnoti Durga lokam
sagacchati sarvakamavapnoti durgalokam sagacchati sarvakamavapnoti durgalokam sagacchati durgalokam sagacchati. Shanti. 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 अपना भाव कृतज्ञता का रखिए। सभी को मन ही मन आभार मानिए। सारे जीव जंतु, सारे व्यक्ति जो भी आपके संबंध में है, we should be in gratitude to everyone, every person who comes across us, every living being. Now we'll say positive affirmations to ourselves. I am happy. I am satisfied. I am full of life, full of love for myself and also around everyone around me. Thank you, God, for whatever you have given me, also for whatever you have not given me. With this sense of gratitude, rub your palms together. Gently keep them on your eyes. With a gentle smile, open your eyes. And thank you, everyone. Thank you for your time and energy. हमारा फ्राइडे को सेशन नहीं होगा, being दशहरा. So we'll meet on Monday. Bye. Thank you, Archana.